done in the exercise? Sir, we have done till question number 6 of exercise 16. Sir, we have to You've start done- from 7. We have done till question number 6. We have to start with question 7. Okay. We will pause this work of ours, chapter congruence. We will continue this chapter. We will stop it here and we will continue it after the UEs maybe, or maybe after finishing the syllabus of reasoning. So today we are going to start with reasoning. Okay, we will Okay, sir. continue the chapter afterwards. And in reasoning, that the topic that we are taking today is directions. Okay. I will Sir, give you- please clean your camera. Okay, sir. Sorry, please what? Sir, please clean your camera. It's Bloody. yes, sir. It's blurred. Is it okay now? Now it's too sahi. Is it better? The quality of laptop camera is not good at all. I think it's getting worse every day. Now, better now? Yes, sir. Very better. Okay. So I will explain some basics about directions first. The topic is directions. Please, all of you, if you have your reasoning notebook, take it out and do the work in your reasoning notebook. Sir, we are doing reasoning. Yes, we will start with reasoning and we Okay. will stop the chapter congruence for now. We will continue it afterwards. Okay. First, we will finish the syllabus of reasoning in the next 2-3 days, 3-4 days. Okay. Write down the heading, directions. The topic is directions. Okay. Sir, what's the syllabus of reasoning in UT2? There are 2 chapters. Coding and decoding, and the second one is No, directions. And the second topic is rankings. First topic is directions. Second is ranking. These are the 2 topics. Okay, sir. Sir, written. Okay. excuse me, sir. Yes. Sir, but the sir Smriti ma'am have sent the syllabus of UT2 in that it's written that reasoning, clocks, and decoding. But you are seeing the syllabus of UT2. It's UT3. You're talking about UT3.
Okay. Got it? Yes, Sir, sir. in UT3 syllabus and reasoning, it is direction and rankings. Yes. Directions and ranking. So we are starting with directions today. After finishing the topic directions, we will start doing rankings. Okay. Okay, sir. So in the topic directions, both the topics which are coming in your UTs are very simple topic. So first of all, in the topic directions, you must know that some basic things about this, that this is north and south are opposite directions, and this is east and this is west. Do you all know about this? Where are north, east, south, west? Yes, sir. आपको पता है पहले से? Yes, sir. So, so you first of all you have to learn this. If you don't know, then you have to learn this. That what are these directions? Where is north? Where is south? Where is east? And where is west? Where is west? Sorry. So you must learn that north is in the upward direction. North कहाँ होता है? Upward direction में होता है. Okay. So obviously north and south are opposite, so south will be downward. East और west को learn करने के लिए एक तरीका मैं बता देता हूँ. India and Pakistan में, if we compare India and Pakistan, then India is in east, Pakistan is in west. Have you ever seen the map? Pakistan को देखा है आप कहाँ पर है पाकिस्तान? Yes, sir. It is in west. India is in east. तो east कहाँ होता है? Right side में. East कहाँ पर होता है? Right side. Right side. ठीक है? So Pakistan is in west, India is in east. India is always right. That is why India is on the right side. Pakistan is always wrong. That is why Pakistan is on the left side. India is always right. So that is why India is on right side, east. याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So let us start with some basic questions of directions. Suppose just a basic question, you don't have to note it down in your copies. Copy में नहीं लिखना है अभी. Okay. Just for the introduction of the topic, which type of questions may come. उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत इजी सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ. That suppose a boy named Rahul started moving towards north. After moving 100 meters north, he turned left and moved 50 meters. He turned left and moved 50 meters. Okay. एक बार और बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना. A boy, Rahul, started moving towards north, and after moving 100 meters, he took a left turn and moved 50 meters. Okay. So you have to tell that in which direction he is facing now. कौन सी Sir, can I direction में वो Sir, face? West. Sir, can I tell? West. Sir, Yes, Sir, it's west. 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 Pakistan चला गया वो. absolutely correct answer. So whenever we do a question, most of the time, almost every time, we take this point as the center point. North, south, west, east को हम लगा देंगे. Suppose Rahul started from this point, point A. A point से start करा राहुल ने,
and he moved towards north direction, and suppose after moving 100 meters towards north, मान लीजिए बी पॉइंट पे पहुंच गया, 100 meters नॉर्थ की तरफ गया, बी पे पहुंच गया, अब उसका फेस कहाँ पर है, नॉर्थ में है, तो राइट में राहुल के राइट में ईस्ट होगा, एम आई राइट और नॉट? राहुल अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो उसका राइट साइड में क्या होगा, ईस्ट होगा, एंड लेफ्ट साइड में क्या होगा, वेस्ट। वेस्ट होगा. So he then took a left turn and moved 50 meters. कितना? 50 meters. So he is facing in which direction now? He is facing in the west direction. यहाँ पर left side में कौन सी direction है? West. Okay. So answer is west. Got it, all of you? So these type of questions may come, and more variety will be there. I will be telling you when the questions will come. I will explain every question. So no need to worry about it if there is a new question. You just have to try your best. It's better if you answer the questions on your own without my help. So reasoning is all about this only, that how much you can use your brain without anyone's help. This gives you a better chance always to score good marks in reasoning. Okay. But even if you don't get it, I will explain. Okay. So Chali, let's start with questions. I will be sharing some questions with you. I will share my screen. So let me just open the file. This is the question. First question. तो क्या करना है आपको? You have to give your answer in the chat box. Give your answer in the chat box, and you have to note down the question in your copies also. आपको क्वेश्चन को कॉपी में भी नोट करना है. ओके. अच्छा, एक चीज और, चलिए स्टॉप. आई एम गोइंग टू स्टॉप टेलिंग इट. एक बात सुनो पहले मेरी. एक और कॉन्सेप्ट आई फॉरगॉट टू. आपने शायद ये बनाया था अभी. हैव यू ऑल मेड दिस इन योर नोटबुक्स? नॉर्थ Yes, साउथ sir. कहाँ पर होता है? Yes, sir. तो दिस इज नॉर्थ साउथ. अगर नहीं बनाया तो बना लीजिए फटाफट. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शंस आप बना लीजिए. नाउ द डायरेक्शन व्हिच इज बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है, दैट विल बी कॉल्ड एज साउथ ईस्ट. ओके. And Southeast. direction which is between north and west, that will be called as northwest. Obviously, similarly, ये भी directions आपको mark करनी है कॉपी में. Mark these directions also. Okay. So this is northeast and this is southwest. Okay. Northeast, Okay. southwest. Mark the directions. And now I will share the question again. Sir, marked. Start doing the question. Note down the question in the copies also. You have to note down the question in your copies also. Sir, in unit test, sir, we have to submit the reasoning copy also. Yes. So, sir, we have to make separate copy of reasoning. I will tell you. If you have Okay, it, sir. if it's a separate copy, it's better. Okay, sir.
Sir, we can write the answers now on the chat box. Yes, yes, you can write your answers in the chat box now. Give your answers. Sir, given. Okay. I want an answer from everyone. Sir, I also have given. Very good. So all of you Sir, should my answer answer. is right. Try your best and give your answer, okay? And note down the question in your copies also. Sir, my answer is right. But I have not checked your answer. Let me first let all the students answer, then I will check. Okay? Doesn't matter if your answer is wrong, but giving an answer is more important. Try your best and give the answer. Sir, I have given the answer. Okay. Okay, so time up. Have you all written the question in your copies? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. So now I will tell you the answer. K is 40 meter southwest of L. मान लीजिए L यहाँ पर है. Okay. Now K कहाँ पर है? 40 meter southwest of L. Southwest कहाँ पर हुआ? यहाँ पर. तो सपोज यहाँ पर K है, आपको कितनी डिस्टेंस पर? 40 मीटर साउथवेस्ट. 40 meters. Okay. I hope you all can see this on the board जो मैं बना रहा हूँ. Yes, sir. Okay. Now 40 meters southwest of L. क्या हुआ? Yeah. M is 40 meters southeast of L. M कहाँ पर है? L के 40 meter southeast में. So this is M. 40 meter southeast. Southeast direction में. L की southeast direction में है M. Okay. Then M is in which direction of K? K से अगर कंपेयर करेंगे तो M कहाँ पर है? K के कंपैरिजन में M कहाँ है? The answer is east direction. आंसर क्या हुआ आपका? ईस्ट में. Sir, every question where you draw this. It is your choice. The questions will be MCQs only. So it is your Okay, choice sir. if you want to draw it or not. Okay. So K is in which direction? Sorry, K के रेस्पेक्ट में M कहाँ पर है? ईस्ट में. अगर K देखेगा तो M को कहाँ देखेगा? Obviously ईस्ट की तरफ देखेगा तो उसको M दिख जाएगा. Am I right? So M is in east of K. Answer is A, option A, east. Okay. Let me check who all have given the correct answer. Doesn't matter if your answer is wrong. It's more important to give the answer. Okay. जैसे कि मैंने पहले भी बोला आपको. So Om Saraswat has given the correct answer. Ayush Agarwal has given correct.
Urvashi has also given the correct answer. Avnish, correct answer. Sir, I was wrong. I was wrong. Ashish has not given the correct answer. No problem. Jia Tiwari has given correct answer. Jia beta, how are you? Okay, next is जिसने करेक्ट आंसर दिया है बस खत्म हो गया बाकी चलिए नो प्रॉब्लम आई होप यू विल ट्राई योर बेस्ट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके so those who have tried very good no problem if your answer is wrong I hope you will give the next one correct okay so this is your next question clear करने जा रहा हूं मैं yeah start doing it note down the question also in your copies don't forget first you can give your answer and after giving your answer you have to note down the question in your copies okay have you all done Sir, can I tell the Yes, answer? sir, I sent the answer on your personal Sir, chat I on have the also Zoom. sent the answer. okay very good I also. very few answers are there I want more students to give the answers बाकी बच्चे भी answers दीजिए जल्दी से there are 13 students in the meeting and I have got only 7 answers till now
बाकी के 6 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? गिव योर आंसर्स। जल्दी करो। If you will take so much of time in one question, you will not be able to complete the question paper. Sir, given. Okay. Okay. So I'm going to discuss the question. Shyam walks 5 kilometers towards east and then turns left and walks 6 kilometers. चलिए स्टार्टिंग नया बनाते हैं। So these are the directions: north, south, west, east. Shyam walks 5 kilometers towards east. यहाँ से स्टार्ट करा श्याम ने, मान लीजिए पॉइंट ए से 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। So 5 kilometers east. Then turns left. अब श्याम लेफ्ट टर्न करेगा तो कहाँ की तरफ जाएगा? नॉर्थ या साउथ? North. Obviously, North. अगर है और North. लेफ्ट करेगा तो कहाँ मुड़ेगा? नॉर्थ की तरफ टर्न करेगा। He turns left and walks how much? 6 kilometers. 6 kilometer. Walks 6 kilometers after turning left. Okay. Then he turns right and walks 9 kilometers. फिर उसके बाद Sir, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, कहाँ मुड़ गया? राइट में। राइट कहाँ है अब उसका? ईस्ट की तरफ। east. East. राइट टर्न लिया एंड कितना चला? 9 किलोमीटर्स। He turns right and walks 9 kilometers. Finally, he turns to his right. फिर से राइट मुड़ गया। राइट South. मुड़ा, कहाँ गया? यानी कि South. नीचे की तरफ जा रहा है। Finally, he turns right and walks 6 किलोमीटर गया। तो 6 किलोमीटर ऊपर गया था, 6 किलोमीटर नीचे आया। That means दोबारा से यहीं पर आ जाएगा इसी लाइन पे। Am I right or not? Yes, sir. Yes, sir. पहले 6 किलोमीटर ऊपर गया था, फिर 6 किलोमीटर नीचे आया। तो दोबारा से यहीं इसी लाइन पे आ जाएगा वापस। तो how far is he from the starting point? Starting point 19. से कितनी दूर है ये वाली डिस्टेंस? 14 kilometer. 14 है या 5 + 6 + 9 + 6 ये सारा ऐड करेंगे या केवल 14 आंसर देंगे आप? Sir, 5 no, Sir, because answer sir, 26 6 kilometer. is in the Nine. vertical and we have to plus the तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम डायरेक्ट देखेंगे तो 5 किलोमीटर प्लस ये डिस्टेंस कितना है? 9 है। देख लीजिए 9। तो 5 + 9 व्हाट इज योर आंसर? 14 किलोमीटर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? फॉलो यू। yes, sir. आंसर इज 14 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बता दूं Excuse me, Yes, sir. sir. हाँ जी, यस बोलो। सर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो फिर सर स्टार्टिंग पॉइंट के साथ हम उसका हर एक वो डेस्टिनेशन गिनते जाएंगे ना, तभी तो सर शायद आंसर आएगा। नो बेटा, यू हैव टू गिव कि अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। ये नहीं पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसने कितना जर्नी ट्रेवल किया, ये नहीं पूछा। अगर मैंने ये कहा कि आप यहाँ से मुरादाबाद गए, फिर मुरादाबाद से आप फॉर एग्जांपल आप चले गए, मान लेते हैं कौन सी सिटी मान लें, पहले आप बरेली में थे, बरेली से मान लीजिए मुरादाबाद चले गए, फिर मुरादाबाद से मान लीजिए रामपुर चले गए, एंड फिर रामपुर से आप बरेली आ गए मान लीजिए। तो आप स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी दूर है? 0 किलोमीटर दूरी तो है।
ये दोबारा पहले मुरादाबाद, पहले रामपुर जाओगे फिर मुरादाबाद जाओ, फिर दोबारा घूम के बरेली थोड़ी आओगे, बरेली में तो वापस घूम करके बरेली में तो आए, तो आप क्या बताएंगे? 0। डिस्टेंस कितनी हुई आपकी? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ओके ओके, तो यहाँ पर 5 + 9 ओके 14। सर। मैंने ये नहीं पूछा था, अगर क्वेश्चन में ये पूछते हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तब आंसर होता 5 + 6 + 9 + 6, कितना हो जाता? 26 किलोमीटर। बट वो नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर। गॉट इट? Okay, sir. यस सर। ओके, सो बताऊं किस किसने सही आंसर दिया? Ranshir has given the correct answer, and Gia is fine. I am also fine. Ranshir के बाद Urvashi has given the answer correctly, but he has given it just now, तो मैं consider नहीं करूंगा जब मैंने आंसर बता दिया उसके बाद, तो बाद में किसी के आंसर नहीं लिए जाएंगे। So only one student has given the correct answer, which is Ranshir. Very good. No problem. कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर दें। 2 मिनट बचे। आई होप यू विल नोट डाउन द क्वेश्चन क्विकली। जल्दी से नोट करिएगा। मैं छोटा क्वेश्चन ले लेता हूँ कोई भी। चलो ठीक है, यही करो। नोट डाउन द क्वेश्चन इन योर कॉपीज। ओके, और ओके, ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड उसके बाद आप स्टार्ट करिए लिखना, सॉरी करना, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। सर टेक इन द स्क्रीनशॉट। ओके, Sir, taken. टेक द स्क्रीनशॉट। Sir, taken the नाउ डू द क्वेश्चन।